Hello students, Jinali Shah welcomes you all on behalf of Saraswati International Academy. Today we will begin with the next part of the chapter Photosynthesis in Higher Plants. Students, in the previous video we have studied regarding the site for photosynthesis, that is where does the process of photosynthesis occur. So we have seen that it occurs in the chloroplast, and this chloroplast basically are present in the green parts of the plant. We have also studied in detail regarding the structure of chloroplast. Apart from that, we have studied the roles of different pigments taking part in the process of photosynthesis. Now, today we will study regarding which are the two main steps of the photosynthesis, and we will study regarding the light reaction of the photosynthesis. So, let us begin with our topic, the two steps of photosynthesis. While discussing the structure of chloroplast, we have came across the two steps of the photosynthesis. We have seen that the complete process of photosynthesis can be divided into two steps or two phases. One is the photochemical reaction and second one is the dark reaction. So, the first step of the photosynthesis is dependent on light, and hence it is called as light reaction or photochemical reaction. So, the first step of photosynthesis is a light dependent process, and as it is dependent on light, that step is called as the photochemical reaction, or also it is called as the light reaction. In this step, assimilatory power, that is ATP and NADPH, reduced nicotine amide dinucleotide phosphate. So, ये assimilatory power is basically, here we are talking about the synthesis of the glucose. So, ये glucose को synthesize करने के लिए जो materials की requirement है, that are ATP and NADPH. So, ये जो ATP and NADPH है, उसका generation कौन से step में होता है? First step, that is the photochemical reaction. So, in this step, assimilatory power, that is ATP and NADPH, is generated in the thylakoids. Whereas this step is followed by the second step, in which light is not directly required. See students, it should not be misinterpreted कि dark reaction है तो light की ज़रूरत नहीं है. It is not directly dependent on light, कि वो reaction होने के लिए light का होना ज़रूरी नहीं है. बट ये प्रोसेस होने के लिए लाइट रिएक्शंस के प्रोडक्ट्स आर मस्ट. सो हियर इट इज लाइट इज नॉट डायरेक्टली रिक्वायर्ड, but the assimilatory power, that is ATP and NADPH generated in the light reaction, it is used up for the fixation of carbon dioxide to carbohydrate. So the second step is the step where light is not required directly, but the products of the light reaction are used to convert carbon dioxide to carbohydrate. This second step is called dark reaction or biosynthetic phase, which takes place in the stroma of the chloroplast. First step occurs in the thylakoid, whereas the second step it occurs in the stroma. So, these are the two steps of the photosynthesis. First is the photochemical reaction, or also called as the light reaction, and second one is the dark reaction or biosynthetic phase, or also it is called as a thermochemical reaction. Now, in today's lecture, let us study regarding the light reaction. So, what is light reactions? So, light reactions or photochemical phase include light absorption, water splitting, oxygen release, and formation of high energy chemical intermediates like ATP and NADPH. So, light reaction, it includes various things like light absorption. ये step में light energy absorb होगी. Along with that, there will be the splitting or breakdown of water molecule. There will be oxygen release. We know that during the process of photosynthesis, oxygen is released. So, this oxygen is released during the light reaction, and the formation of high energy chemical compounds like ATP and NADPH.
several protein complexes are involved in this process. So light reaction means light absorption होगा. So basically which component is responsible for absorption of light energy? It is the chlorophyll pigments. So the pigments are organized into two discrete photochemical light harvesting complexes. So where are pigments organized, or where are pigments located? So there are complexes called as light harvesting complexes, and within these light harvesting complexes, two photosystems are located. One is photosystem 1, that is PS1, and another one is photosystem 2, that is PS2. So the pigments, they are organized into two discrete photochemical light harvesting complexes within PS1 and PS2. So PS1 and PS2, they contain light harvesting complexes. लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस यानी वो लाइट एनर्जी को एब्सॉर्ब करते हैं. These are named in the sequence of their discovery and not in the sequence in which they function during the light reaction. Now the name PS1 and PS2 are on the basis of the sequence of their discovery, which means PS1 was discovered first and later on PS2 was discovered. It does not mean their role during the or in the sequence in which they function during the process of photosynthesis or light reaction of the photosynthesis. ऐसा नहीं है कि light reaction में पहले PS1 utilize होगा and then PS2. No, it has nothing to do with that. Basically, PS1 and PS2 indicates the sequence of their discovery. It has nothing to do with the sequence in which they function at the time of the light reaction. The light harvesting complex are made up of hundreds of pigment molecules bound to the proteins. So light harvesting complex is made up of pigment molecules, which includes chlorophyll A, chlorophyll B, xanthophylls, carotenoids, etc. Along with these pigments, there are proteins. So basically, ये जो pigments है, these pigments are associated with the proteins. Each photosystem has a pigment protein complex composed of chlorophyll A, chlorophyll B, carotenoids and other components which are required in electron transport. Now what is photosystem composed of? So a photosystem is a pigment protein complex जहाँ पे various pigments होते हैं. Chlorophyll A, chlorophyll B, carotenoids, and there are other components which are required in the electron transport. So now when you study in detail the light reaction, so यहाँ पे आप देखोगे there will be the transfer of electrons, and this transfer of electrons are responsible for synthesis of the ATP. हमने बोला कि light reaction में ATP and NADPH formation होता है. So ये जो formation होता है उसके लिए transfer of electrons play the very important role. So ये electron transport करने के लिए various carriers are there, various molecules are there. So these electron carriers are also the part of the photosystem. Okay. Each pigment protein complex consists of a core complex having a reaction center plus about 40 to 60 chlorophyll molecules and an antenna complex. Now ये जो protein complex है, pigment protein complex, what does it consist? It consists of two things. One is core molecule और core complex के जहाँ पे एक single chlorophyll A का molecule रहेगा along with other 40 to 60 chlorophyll molecules. That chlorophyll molecules may be chlorophyll A, chlorophyll B, etc. But there is a one single chlorophyll A molecule जो either chlorophyll A 680 हो सकता है, वो हम देखेंगे, या chlorophyll A 700. 680 and 700 indicates that that chlorophyll A molecule can absorb the wavelength of 680 or 700 nanometer. So ये जो pigment protein complex है वहाँ पे core complex होता है which have the reaction center. जो chlorophyll A, single chlorophyll A molecule जो मैंने बोला
उसको बोलते हैं रिएक्शन सेंटर. Along with that, there are other 40 to 60 chlorophyll molecules. And apart from that, it consists of the antenna complex. Each photosystem has all pigments except one molecule of chlorophyll A, forming a light harvesting system also called as antenna. So ये जो एंटीना जो मैंने बोला एंटीना कॉम्प्लेक्स इज दैट पार्ट के जहाँ पे ऑल द पिगमेंट मॉलिक्यूल्स विल बी प्रेजेंट एक्सेप्ट वन मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए जो रिएक्शन सेंटर है. रिएक्शन सेंटर के जो क्लोरोफिल ए 680 या क्लोरोफिल ए 700 वाला बना है वो नहीं होगा. Apart from that, all other chlorophyll A, chlorophyll B, xanthophylls and carotenoids will be present in the antenna part. Now ये pigments क्या करते हैं? These pigments helps to make photosynthesis more efficient by absorbing the different wavelengths of light. So ये जो different pigments है A, B, chlorophyll A, chlorophyll B, xanthophylls, carotenoids, ये सब का काम क्या है? They make the process more efficient by absorbing the various wavelengths of the light. A single chlorophyll A molecule forms the reaction center. So single जो chlorophyll A का molecule है वो reaction center है. The reaction center is different in both the ecosystem. See दोनों photosystems है उसमें difference है reaction center का. Reaction center in both the photosystems are different. In PS1, the reaction center chlorophyll A has an absorption peak at 700 nanometer. So PS1 में जो reaction center पे chlorophyll A molecule है, it will form the absorption peak at 700 nanometer. That is, it can absorb the maximum wavelength of 700 nanometer, and hence it is called as P700. While in PS2 the absorption maxima at 680 nanometer and is called as P680. So PS1 में जो single chlorophyll A molecule जो reaction center है, it has a capacity to absorb the wavelength of 700 nanometer. And in PS2 जो reaction center पे chlorophyll A molecule है, it absorbs the wavelength of maximum wavelength of 680 nanometer. And hence the reaction center at PS1 is called P700 and at reaction in PS2 it is called as P680. ये ज़्यादा clear होगा at the later part of the video as well as when we study cyclic and non-cyclic electron transport. Various pigment molecules in antenna absorbs the different wavelengths of light and transfer their absorbed energy to core complex which is finally concentrated in the reaction center chlorophyll A. So antenna का काम क्या है? एंटीना जैसे हम टीवी पे पहले एंटीना होता था वो क्या करता था? सब सिग्नल्स को कलेक्ट करता था, राइट? सेम वे ये एंटीना के अंदर जो पिगमेंट मॉलिक्यूल है वो डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट को एब्सॉर्ब करती है. एंड ये जो वेवलेंथ्स ऑफ लाइट है उन्होंने जो लाइट एनर्जी एब्सॉर्ब की है दे ट्रांसफर देयर लाइट एनर्जी टू द क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द रिएक्शन सेंटर. रिएक्शन सेंटर पे कितने क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है? एक ही है. PS1 में वो P700 है, PS2 में वो P680 है. सो एंटीना में जितने भी पिगमेंट मॉलिक्यूल्स है उन्होंने जो भी लाइट एब्सॉर्ब की है दे ट्रांसफर देयर लाइट एनर्जी टू द क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल ऑफ द रिएक्शन सेंटर. एंड the latter, that is chlorophyll A, or you can say the reaction center, it acts or it takes part in the photochemical reaction. एंटीना के पिगमेंट्स डायरेक्टली फोटोकेमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व्ड नहीं है. फोटोकेमिकल रिएक्शन स्टार्ट करने का काम या केमिकल रिएक्शन करने का काम किसका है? रिएक्शन सेंटर का, जो सिंगल क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है. लेकिन वो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल एंटीना के जो पिगमेंट मॉलिक्यूल है उन्होंने जो लाइट एनर्जी एब्सॉर्ब की है वो लाइट एनर्जी को यूज़ करके वो फोटोकेमिकल रिएक्शन स्टार्ट करेगा. द रोल ऑफ एंटीना कॉम्प्लेक्स एंड कोर कॉम्प्लेक्स इज सिग्निफिकेंट
in harvesting the maximum solar radiation over a large area and passing their absorbed energy to the reaction centers. It is because the energy trapped by the single chlorophyll molecule is not enough to initiate the photochemical reaction or first chemical reaction that would occur in light. अभी ये क्वेश्चन होता है कि सिंगल क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल ही लाइट रिएक्शन को स्टार्ट करने वाला है, सब काम वो ही करने वाला है. तो ये जो एंटीना का काम क्या है, एंटीना में जो पिगमेंट्स है उसका काम क्या है, कोर कॉम्प्लेक्स में रिएक्शन सेंटर के अलावा दूसरे 40 to 60 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है, उनका काम क्या है. सो देयर वर्क इज दैट कि एक सिंगल क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल जो लाइट एनर्जी ट्रैप करेगा वो फोटोकेमिकल रिएक्शन को स्टार्ट नहीं कर सकता है. सो ये दूसरे जो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल ने लाइट एनर्जी एब्सॉर्ब की, वो जब क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल ऑफ द रिएक्शन सेंटर को एनर्जी ट्रांसफ़र करेंगे, ये टाइम पे फोटोकेमिकल रिएक्शन स्टार्ट होगा. ओके, क्लियर स्टूडेंट्स? सो सी स्टूडेंट्स, this is a light harvesting complex. See, this is the pigment molecules, these are the photon, light energy, and ये वाला क्या है, reaction center है, that is either A680 or it may be A700. okay, and other are the other chlorophyll molecules, these are the other pigment molecules. यहाँ पे भी आप देख सकते हो, this is a photosystem, ये एंटीना के मॉलिक्यूल्स है, एंड दिस इज़ अ सिंगल क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल ऑफ द रिएक्शन सेंटर. अभी ये रिएक्शन सेंटर जब एक्साइट होगा तो वो इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज़ करेगा, एंड ये इलेक्ट्रॉन्स विल बी ट्रांसपोर्टेड बाय द डिफरेंट इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, जो हम साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन के टाइम पे स्टडी करेंगे. एंड देखो, ये फोटोन है, ये दूसरे पिगमेंट मॉलिक्यूल्स है. दूसरे पिगमेंट मॉलिक्यूल्स ने एनर्जी फाइनली किसको ट्रांसफ़र की, देखो यहाँ से यहाँ गई, यहाँ से यहाँ गई, यहाँ से यहाँ पे गई, फाइनली वो एनर्जी कहाँ पे गई, आप देख सकते हो कि फाइनली द एनर्जी और रिलीज्ड और एनर्जी ट्रैप्ड बाय द एंटीना पिगमेंट मॉलिक्यूल्स, दे आर ट्रांसफर्ड टू द रिएक्शन सेंटर, दैट इज क्लोरोफिल ए. Clear students? So that is regarding the light harvesting complex. Now I told you there are two photosystems. One is photosystem 1 and another one is photosystem 2. Let us study them. So first of all, photosystem 1 or PS1. The PS1 complex contains single molecule of chlorophyll A 700 or P700, which is a special chlorophyll molecule that absorbs the visible light near 700 nanometer wavelength. So PS1 में क्या होता है, जो रिएक्शन सेंटर है वहाँ का जो क्लोरोफिल ए है, it will absorb the maximum wavelength of 700 nanometer, and therefore that chlorophyll A is called as chlorophyll A700, or also it is called as P700. This single molecule is the reaction center for PS1, and to which all other accessory pigment molecules in this photosystem transfer their energy. So what is the reaction center of PS1? It is P700. एंड बाकी जितने भी पिगमेंट मॉलिक्यूल्स है उन्होंने जो भी लाइट एनर्जी एब्सॉर्ब की है वो किसको ट्रांसफ़र करेंगे, इट विल ट्रांसफ़र इट टू द क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल ऑफ 680 nanometer. Besides P700, the PS1 contains 200 to 400 chlorophyll, which are chlorophylls A and chlorophyll B, 50 carotenoids and 2 iron containing proteins called FES proteins. So P700 के अलावा PS1 में क्या है? So there are other 200 to 400 chlorophyll A and B molecules, 50 carotenoids molecule, and there are 2 iron containing proteins which are called as FES proteins. What are they called as? FES proteins. And these FES proteins are the primary electron acceptors of PS1. PS1 जब लाइट एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा तो वो इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करेगा. ये इलेक्ट्रॉन्स को जो एमिट हुए हैं, रिलीज हुए हैं, उसको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स एक्सेप्ट करते हैं. सो FES प्रोटीन्स आर द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स of the PS1.
PS1 is associated with both cyclic and non-cyclic electron transports and drives the electrons from PS2 to NADP+. अभी ये आपको जब हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम स्टडी करेंगे तब ज़्यादा क्लियर होगा, बट अभी के लिए इतना याद रखो कि PS1 इज एसोसिएटेड, इट इज़ पार्टिसिपेटिंग इन बोथ साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, एंड जब नॉन साइक्लिक में वो इन्वॉल्व होता है तो एट द टाइम ऑफ नॉन साइक्लिक वो PS1 में से इलेक्ट्रॉन लेगी एंड इट विल ट्रांसफर दैट इलेक्ट्रॉन्स टू NADP+. ये कैसे होगा वी विल स्टडी एट द टाइम ऑफ द साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम. However, it can carry cyclic electron transport independently. So, ऐसा नहीं है कि वो नॉन साइक्लिक में ही इन्वॉल्व होगी, साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट भी वो इंडिपेंडेंटली कर सकता है. सो दैट इज रिगार्डिंग द PS1. नाउ let us study regarding the PS2. The PS2 complex contain a single molecule of chlorophyll A680 or P680, a special chlorophyll molecule that absorbs the visible light near the 680 nanometer wavelength. So PS2 में एक सिंगल क्लोरोफिल A मॉलिक्यूल है जो कितनी वेवलेंथ, मैक्सिमम कितनी वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्सॉर्ब कर सकता है, 680. So that is called as the reaction center which contains chlorophyll A 680 molecule or P680. This single molecule is the reaction center for PS1 and to which all other accessory pigment molecules in this photosystem transfer their energy. PS2 also contains about 200 chlorophylls and 50 carotenoids. Except the reaction center P680, all other pigment molecules are called accessory pigment molecules. It also contains its primary electron acceptors that is called as pheophytin. जैसे PS1 में प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या था, FES प्रोटीन. यहाँ पे जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है यानी कि जब PS2 एक्साइट होकर इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को फर्स्ट एक्सेप्ट कौन करेगा, सो इट विल बी pheophytin. Now, besides pigment molecules, the PS2 also contains quinone, manganese-bound proteins and unknown water oxidizing enzyme. अभी apart from pigment molecules के अलावा PS2 contains a carrier called as quinone, some manganese-bound proteins and unknown water oxidizing enzyme जो water को split करेगी. So water split के लिए जो enzymes required है that is unknown, but that unknown enzyme is a part of PS2 also. PS2 has almost equal number of chlorophyll A and chlorophyll B molecules. It is associated with non-cyclic electron transport, splitting of water, evolution of molecular oxygen and reduction of NADP plus to NADPH. So PS2 क्या करता है, so PS2 non-cyclic electron transport, water splitting, release of oxygen and reduction of NADP plus to NADPH. जबकि जब PS1 सिर्फ साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करता है, ओनली क्या करता है, ATP फॉर्मेशन. ये दूसरे जो प्रोसेस है, इट कैरीज ऑफ साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट एंड फॉर्मेशन ऑफ ATP. स्प्लिटिंग ऑफ वाटर एंड रिलीज ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन does not occur at the time of the cyclic electron transport. These are the differences between PS1 and PS2. The reaction center in PS1 is P700, in PS2 it is P680. PS1 participates in both cyclic and non-cyclic, whereas PS2 transports it participates only in non-cyclic pathway. It is PS1 is not involved in photolysis of water, that is splitting of water and evolution of oxygen, whereas both these processes are the part of the PS2. PS1 it receives the electrons from PS2 during non-cyclic photophosphorylation. See, PS1 cyclic भी करता है, non-cyclic भी करता है. जब ये non-cyclic करता है तब उसके पास इलेक्ट्रॉन्स कौन देता है, PS2. Whereas PS2 always receives the electrons by photolysis of water.
PS2 को इलेक्ट्रॉन्स कौन देगा? बाय फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। ये आपको तब क्लियर होगा जब आप साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हम स्टडी करेंगे. एट दैट टाइम दिस टॉपिक विल बी मोर क्लियर. The PS1 is located in unstacked region of granum facing the chloroplast stroma. Unstacked region of the granum. Unstacked यानी एक के ऊपर एक नहीं है, तो वो कौन सा पार्ट हुआ? सो बेसिकली स्ट्रोमल लेमिला या फ्रेट चैनल, यानी कि दो ग्रेनम को जो पार्ट्स ज्वाइन करता है, दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रोमल लेमिला. एंड वहाँ पे दे आर अनस्टैक्ड पार्ट. सो ये रीजन में PS1 located है. Whereas the PS2 is located in stacked region of the thylakoid membrane facing the lumen of the thylakoid. This PS2 will face the cavity of the thylakoid, whereas PS1 will face the stromal part. Chlorophyll and carotenoid ratio is 20 to 30:1, whereas chlorophyll to carotenoid ratio is 3 to 7:1. So that are certain differences between PS1 and PS2. Now, a general scheme of electron transport. Electron transport कैसे होगा? In detail we will be studying in next video, that is cyclic and non-cyclic for transport. But how the electron transports occurs, we will study in brief in this video. एंड मेन जो फोटो सिस्टम है, इट इज़ PS2. नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इज द मेन थिंग. साइक्लिक अकर्स रेयरली. सो नॉर्मली प्लांट्स अंडरगो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन रिएक्शंस. ये फॉस्फोराइलेशन रिएक्शंस क्या है, वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट वीडियो. In PS2, the reaction center chlorophyll A absorbs 680 nanometer wavelength of red light, causing electrons to become excited and jump into and further orbit farther from the atomic nucleus. क्या बोल रहा है? जो PS2 में reaction center है, that is chlorophyll A molecule at the reaction center. It absorbs 680 nanometer wavelength. As soon as it absorbs this wavelength of light, it becomes excited. When it becomes excited, it emits electron. And the emitted electron, it jumps away from the atomic nucleus. Okay? Now, ये जो emitted electrons है, ये emitted electron, say for example, this is a chlorophyll A molecule called as the 680 nanometer. ये क्या एब्सॉर्ब करता है? लाइट एनर्जी एब्सॉर्ब करता है. जैसे ही लाइट एनर्जी एब्सॉर्ब करता है, ये एक्साइट हो जाता है. दिस नाउ इज कॉल्ड एज व्हाट? एक्साइटेड. ये एक्साइटेड वाला क्या करता है? इलेक्ट्रॉन्स एमिट करता है. एंड ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है. दे आर द कंपाउंड कॉल्ड एज द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स. इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स ये इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? एक्सेप्ट करते हैं. So these electrons are picked up by an electron acceptor, which passes the electrons to electron transport system consisting of the cytochromes. So क्या बोला? Say for example, this is A680. ये A680 ने क्या एब्सॉर्ब किया? लाइट एनर्जी एब्सॉर्ब की. लाइट एनर्जी एब्सॉर्ब की तो इसने क्या एमिट किया? इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया इसने क्या? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स. अभी ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है, वो इलेक्ट्रॉन को वेरियस एक्सेप्टर्स को में से पास करती है. ये एक्सेप्टर्स किसके बने हैं? साइटोक्रोम से बने हैं. किसके बने हैं? साइटोक्रोम्स. ओके. नाउ सी फर्दर व्हाट हैपन्स. These electrons are picked by electron acceptor, which passes the electrons to electron transport system consisting of cytochromes. This movement of electron is downhill. Downhill in terms of oxidation reduction और redox potential scale. Okay? ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कैसा होता है? डाउनहिल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट. दैट इज उसका जो डाउनहिल इन द टर्म ऑफ द ऑक्सीडेशन रिडक्शन. से फॉर एग्जांपल, एक में से इलेक्ट्रॉन्स मूव हो रहा है तो दूसरे में इलेक्ट्रॉन जा रहा है. जिसमें इलेक्ट्रॉन निकला वो ऑक्सीडाइज होगा, एंड जिसमें इलेक्ट्रॉन गया वो क्या होगा? रिड्यूस होगा. अभी रिड्यूस वाला जो है वो फिर से कोई दूसरे को इलेक्ट्रॉन होगा. एक सिंपल वे में मैं समझा रही हूँ. से फॉर एग्जांपल A680, इसने इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ किया.
ये एक एक्सेप्टर के पास गया, ओके। इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकला, यानी ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया, और ये क्या हो गया, रिड्यूस्ड। अभी ये रिड्यूस्ड वाला कोई एक दूसरे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो अभी ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइज, और ये क्या हो गया, रिड्यूस्ड। सेम वे ये कोई दूसरे को दे रहा है, जब ये इधर से जाएगा तो ये खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, रिड्यूस। सो ये क्या हो गया, इट इज़ द डाउनहिल मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स. What is it called as? Downhill movement of the electrons. The electrons are not used up as they pass through the electron transport chain but are passed on to the pigments of the PS1. अभी क्या बोला, ये A680 है, ओके, दिस इज PS2. ये कौन सा पार्ट हो गया, PS2. PS2 में से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स, दूसरे साइटोक्रोम्स, एंड फाइनली ये इलेक्ट्रॉन से ये ऐसे यूज़ नहीं हो जाएंगे. दिस इलेक्ट्रॉन्स दे मूव टू द reaction center of chlorophyll A700 of PS1. So 680 PS2 ने जो लाइट एनर्जी एब्सॉर्ब करके जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट किए हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कौन करता है, रिएक्शन सेंटर एट PS1. Simultaneously, the electrons in the reaction center of PS1 are also excited when they receive the wavelength of 780 nanometer and are transferred to acceptor molecules that has a greater redox potential. Okay, ये A680 में से PS2 वाले इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे आए, P700 पे, ओके. अभी ये P700 पे इलेक्ट्रॉन्स आ गए, बट यही टाइम पे P700 खुद भी तो लाइट एनर्जी एब्सॉर्ब करेगी, तो वो इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा, सो वो इलेक्ट्रॉन्स दे आर एक्सेप्टेड बाय अदर एक्सेप्टर मॉलिक्यूल्स जिसका रिडक्स पोटेंशियल ज़्यादा होगा. सो स्टूडेंट्स, these electrons then are moved downhill again, this time to a molecule, energy rich molecule, which is called as NADP+. Which molecules? NADP+, that is oxidized adenine dinucleotide phosphate. Now, what happens here? The addition of this electron reduces NADP+. अभी PS2 के इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे गए, PS1 ने खुद लाइट एनर्जी एब्सॉर्ब करके जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट किए वो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे चले जाएंगे, तो एक्सेप्टर, एंड ये एक्सेप्टर्स इलेक्ट्रॉन को कहाँ पे पहुँचाता है, NADP+. इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिस NADP+ इज रिड्यूस्ड, किस में रिड्यूस हो जाता है, NADPH+H+. ये NADP+ का इलेक्ट्रॉन्स की एंट्री के वजह से रिडक्शन होता है, जिसकी वजह से ये रिड्यूस हो जाता है NADPH एंड H+ में. सो आप देख सकते हैं कि जो NADPH है, जो एसिमिलेटरी पावर जिसके पास है, वो जनरेट हुआ नॉन साइक्लिक के टाइम पे. दिस होल स्कीम ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्टार्टिंग फ्रॉम PS2 uphill to the acceptor, down the electron transport chain to PS1, excitation of electrons, transfer to another acceptor, and finally downhill to NADP+, reducing to NADPH++H+, is called Z scheme due to its characteristic shape. See, ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट की जो पूरी स्कीम है उसको Z स्कीम बोलते हैं ड्यू टू इट्स शेप. अभी Z शेप जैसा स्ट्रक्चर बनता है, ड्यू टू दैट इट इज़ कॉल्ड एज Z स्कीम ऑफ द फोटोसिंथेसिस. कैसे, वो अभी मैं एक डायग्राम दिखाती हूँ, उससे ज़्यादा क्लियर होगा. दिस शेप इज़ फॉर्म्ड व्हेन ऑल द कैरियर्स आर प्लेस्ड इन अ सीक्वेंस ऑन अ रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल. सी कैसा Z शेप बन रहा है, हियर इट विल बी क्लियर. सी दिस इज़ द Z शेप. ये PS2 है, LHC जिसका A680 नैनोमीटर है, उसने लाइट एनर्जी एब्सॉर्ब की. लाइट एनर्जी एब्सॉर्ब की तो क्या एमिट हुआ, इलेक्ट्रॉन्स. ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किसने कर दिया, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स. ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से पास हो गए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट देखो, ये अपहिल गया, देन ये डाउनहिल हुआ, देन ये कहाँ पे आ गया, PS1 के, जहाँ पे क्या है,
रिएक्शन सेंटर P700। अभी ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आए, बट ये P700 खुद भी लाइट एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा। उसने जो लाइट एनर्जी एब्सॉर्ब की तब इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो गए। ये इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ले गए, एंड ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स इलेक्ट्रॉन्स किसको देंगे? NADP+, एंड NADP+ रिड्यूस हो जाएगा NADPH में। सो दिस, ये जो शेप बन रहा है due to transfer of electrons, this as a Z shape is formed, and hence it is also called as the Z scheme of the light reaction. So this is how the transfer of electrons takes place, which will be more clear to you when we study cyclic and non-cyclic electron transport. Now, very important process which occurs at the time of the photochemical phase is splitting of water, or also called as photolysis of water. Photo, light, lysis, breakdown. Water splits up in the presence of light. That reaction is called as photolysis of water. And it is the photolysis of water which is responsible to release the oxygen which is released at the time of photosynthesis. हम बोलते हैं कि photosynthesis में oxygen release होता है. So ये oxygen आता कहाँ से है? This oxygen is due to the photolysis of water. The electrons that were moved from PS2 must be replaced. See students, फिर से एक concept समझाती हूँ. हमने नॉन साइक्लिक में ये देखा कि P680 ने जब लाइट एब्सॉर्ब की तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ हुए, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन्स है कभी भी उसके पास फिर से तो आए ही नहीं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स एट द लास्ट तो किसने ले लिए? PS1 ने ले लिए। सो यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन्स आए ही नहीं, यानी ये ऑलवेज कौन से स्टेट में रहेगा? एक्साइटेड स्टेट में। इसको ग्राउंड स्टेट में आना ज़रूरी है, वरना वो दूसरी लाइट एनर्जी को एब्सॉर्ब नहीं करना पाएगा। सो इसको इसमें से जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए हैं उसको रिप्लेस करना ज़रूरी है, एंड दिस रिप्लेस इलेक्ट्रॉन कम्स बाय द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। वाटर स्प्लिट होकर 2H+ एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स बनाता है, एंड ये इलेक्ट्रॉन्स इसको रिप्लेस करेगा। क्लियर? सो the electrons that were moved from PS2 must be replaced. It is achieved by electrons available due to splitting of water. वाटर के ब्रेकडाउन के टाइम पे जो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हुए हैं, that electrons will be used to replace the electrons which are lost from PS2. So how that process occur? The splitting of water is associated with PS2. Water is split into 2H+, O and electrons, that is 2H2O. One water molecule of water gives 4H+ plus O2 plus 4 electrons. This creates oxygen, one of the net products of the photosynthesis. यहाँ पे देखो ऑक्सीजन रिलीज हुआ, एंड दैट इज द मेन प्रोडक्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस। अभी दूसरा अभी बचा क्या? इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। सो द इलेक्ट्रॉन्स नीडेड टू रिप्लेस दोज विच आर रिमूव्ड फ्रॉम PS1 आर प्रोवाइडेड बाय PS2. ओके, PS1 के जो इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो गए तो वो तो कहाँ से रिप्लेस हो जाएंगे? PS2 में से आ जाएंगे। सी स्टूडेंट्स, डोंट गेट कन्फ्यूज्ड, दिस इज P680। ओके, ये P680 है, उसका इलेक्ट्रॉन्स गया, फिर ये इलेक्ट्रॉन्स PS1 में आ गया जहाँ पे नैनोमीटर है 700। ओके, ये P680 के जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स है वो फिर से यहाँ आए नहीं, तो वो कहाँ से आएंगे? वाटर स्प्लिट करेंगे तब। सो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हो गए वो इसको फिर से ला देंगे। ओके, अभी ये जब लाइट एनर्जी एब्सॉर्ब करता है तो वो भी क्या एमिट करता है? इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन ये लॉस्ट इलेक्ट्रॉन्स उसके कौन दे देता है? PS2, राइट? सो द इलेक्ट्रॉन्स नीडेड टू रिप्लेस दोज रिमूव्ड फ्रॉम PS1 आर प्रोवाइडेड बाय PS2. द वाटर स्प्लिटिंग इज एसोसिएटेड विद PS2, which itself is physically located on the inner side of the membrane of thylakoid. Now question, where are the protons and oxygen formed likely to be released? अभी water splitting की वजह से जो protons and oxygen बना वो कहाँ पे release होगा? Whether in the lumen of the thylakoid or on the outer side of the membrane. So the answer to this question is protons are released in the lumen, whereas oxygen is released on the outer side of the membrane. प्रोटॉन्स ल्यूमेन में रिलीज होते हैं, एंड ऑक्सीजन आर रिलीज्ड ऑन द आउटर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन.
So this is how the splitting of water will take place. I end my lecture here. In the next lecture, we will be studying regarding the cyclic and non-cyclic photophosphorylation reactions. Thank you, students.